Great. So already shared the session. There are 1 viewers waiting, and their concurrent viewers are 1, and there are 3 likes. Now there are 4 likes, 1 watching. Prerna Rajput. Hello, beta. What were you doing in the morning session, Prerna? You were not there in the morning session. What happened? Sadia Naz. Welcome, Sadia. You have joined the session for the first time, I believe. आवाज आ रही है ना आपको मेरी? Radhika, hello beta, जीते रहो, कैसे हो? Okay, so let's begin over with the work. Yes, Sadia. What exactly you want to ask? You have raised the hand. Ask it. सादिया बोलो क्या पूछना है आपने? Left the meeting. कोई बात नहीं. चलिए. So in the morning session we had talked about a question. चलिए उस क्वेश्चन के बारे में बात करें. This was the question. So what exactly you have to say about this question? Who has been able to solve it? I got one answer. Where are the other answers? No comments on the previous session. Nobody has answered it. चलिए, let's answer this question कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर देना है. Calculate the pH of 200 milligram of sodium hydroxide, molar mass 40 grams per mole and 185 milligrams. यहाँ पे milligrams है of calcium hydroxide, molar mass 74 grams per mole are present in 1 liter of the solution at 298 Kelvin. Now let's solve this question. देखो हमारे पास है 200 milligrams of sodium hydroxide. 200 into 10 raised to power minus 3 grams of sodium hydroxide we have. अगर हमें इसके मोल्स निकालने हैं तो मोल्स निकालने के लिए वी जस्ट नीड टू डिवाइड इट बाय 40 ग्राम पर मोल. So that is going to give us moles of sodium hydroxide. Clear? Each sodium hydroxide has one OH. एक OH है sodium hydroxide में. So moles of hydroxide ion will be equal to into 1. So that is the moles of hydroxide ion. Any problems with anybody? सर हाँ बेटा बोलो. मिली किया हुआ है तो ग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है. किया तो है बेटा. 200 into 10⁻³ लिखा तो है. ये रहा. लिखा तो है बेटा. यस सर. तो हमने किया तो है इसको 10⁻³ ग्राम से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है. नाउ अब इसमें हमें हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है. नाउ वी टॉक अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हमारे पास है 185 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनटू 10⁻³ ग्राम्स of calcium hydroxide. Now, how many moles it is going to be? Divided by 74. 74. ठीक है. So that many moles of calcium hydroxide are there. But you need to remember that calcium hydroxide, each calcium hydroxide has 2 OH minus.
एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो OH माइनस है। सो दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से OH माइनस कितने, उसके लिए आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट विल गिव अस द मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन whole Yes, divided sir. by total volume, that is 1 liter. चलिए अब इसको कैंसल आउट करते हैं। लेट अस कैंसल इट आउट। ठीक है, 40, here it goes 5 sir। ठीक है, 2, 74, 37, 37, 185, 5 sir। Okay, so it comes out to be 5 into 10 raised to power minus 3 plus 5 into 10 raised to power minus 3, okay, divided by 1. So that turns out to be 10 raised to power minus 2 molar. That is 0.01. Now we have 0.01 molar concentration of OH minus pH निकालने में कोई problem? Yes, I have left Unacademy quality study, but I have not left you. I'm still taking the classes free of cost on Google Meet and YouTube. तो अब आपके पास और भी ज्यादा एडवांटेज है। यू कैन ज्वाइन विद मी लाइव ऑन यूट्यूब एंड गूगल मीट। तो आ जाओ, क्या दिक्कत है? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, बोलो। Sir, why you left an academy? मेरी मर्जी। इसका क्या मतलब है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ? Sir, कुछ तो रीजन रहा होगा। कुछ भी रीजन नहीं है बेटा। 7 बच्चे क्लास में आते हैं, जब 7 बच्चे क्लास में आएंगे तो रीजन काफी है क्या ये, या उससे भी बड़ा रीजन चाहिए? An academy is a professional platform beta. If the teacher does not perform, will they leave the teacher on an academy? क्या आप उनकी गलती निकाल सकते हो इसमें? No, sir. फिर क्यों पूछ रहे हो व्हाई यू लेफ्ट एन अकेडमी? चलो, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, अब तो मैं आराम से खुलेआम कह सकता हूं बेटा देखो ऐसा है कि आई एम टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब एंड गूगल मीट प्लेटफॉर्म। आई एम गिविंग यू टू वे कम्युनिकेशन। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह रहा लाइक करो, अब तो कहूंगा ही नहीं लाइक करो। तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू लाइक, आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, कोई कोड नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। कोई एड नहीं है, कोई मेरी क्वालिफिकेशन भी नहीं है अब तो इसमें। ठीक है सर? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एनीबॉडी हैज अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? अनन्या, इज दैट क्लियर? Yes, sir, clear. तीर्थराज, Yes, sir. अद्वैत, Clear. और यहाँ पे हमारे 2-3 स्टूडेंट जो आने वाले होते हैं तो वो नहीं आए, पता नहीं कहाँ पर है इस समय। चलिए, so that was the qualification. So this is what we have as a total hydroxide concentration. OH minus total is OH minus from sodium hydroxide and OH minus from calcium hydroxide. OH minus total would be sodium hydroxide plus 2 into calcium hydroxide concentration. ये 2 into calcium hydroxide concentration क्यों आया है, इसमें क्लियरिटी है सबको? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, फिर एग्जामिनेशन में इन्हीं में गलती कर देते हो। सर ये 2 कहां से आया? भैया ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर OH माइनस, हमारे पास OH ट्वाइस है, तो जितना भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन है हमारे पास OH माइनस की कंसेंट्रेशन उससे डबल हो जाएगी। क्लियर? ओके, चलिए। तो टोटल हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन इज द सम ऑफ द टू कंसेंट्रेशन। अब यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला है, यही मैंने आपको लिख के दिया था। ठीक है, एंड हियर इट्स गोइंग टू बी द टोटल हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो यार, हमारे पास YouTube के ऊपर 5 स्टूडेंट वॉचिंग है, शायद 5 में से एक मैं हूं। ठीक है, और यहां पर हमारे पास गूगल मीट पर 3 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट टोटल है। अब 8 स्टूडेंट टोटल अगर होंगे तो अन अकेडमी विल फील दैट लॉस हो रहा है ना। ओके, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज अ टोटल हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन। क्लियर? तो यहां पे OH माइनस कंसेंट्रेशन इज 0.01 मोलर, so we can get POH. POH is 2,
and with that pH comes out to be 12. So the answer for this particular question is pH is equal to 12. क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं ये क्वेश्चन इजी है तो दिस इज नॉट इजी क्वेश्चन. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज हियर यू हैव टू थिंक ओवर एवरीथिंग. क्वेश्चन अगर टाइम की बात करोगे विद इन 40 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा, बट इफ यू नो हाउ टू सॉल्व इट. क्लियर? अब हाउ टू नो वेदर हाउ टू सॉल्व इट, ये क्वेश्चन मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि दिस क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड आईआईटी मेंस एटलीस्ट. नीट से ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है ये. आईआईटी मेंस का हम इसको मान सकते हैं, और कहीं पर कोई भरोसा नहीं आईआईटी एडवांस में भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन. ठीक है. नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन तो कई बार आए हुए हैं कि वी हैव अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस एंड देन वी फाइंड द पीएच. तो उसमें एसिड और बेस को सब्ट्रैक्ट करने वाला तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है. इज इट क्लियर? चलिए सर, लेट्स हैव दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन ना बहुत फेमस है और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 raised to power -8 मोलर HCl. अब इससे पहले कि आप सॉल्व करें, आई जस्ट गिव यू अ हिंट, अ सिंपल हिंट. यू कैन नॉट neglect the contribution of water. You cannot neglect the contribution of water. ठीक है. चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए. आंसर दीजिए जल्दी से. इसका ना एक छोटा सा ट्रिक है. लेट अस कंसीडर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइड ऑफ वाटर टू बी 10⁻⁻7. वैसे 10⁻⁷ से कम है. एनसीईआरटी ने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व किया हुआ है, बट वी डोंट एक्चुअली नीड इट, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेंगे तो काफी हो जाएगा. तो यहां पर हम मान लेते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl इज इक्वल टू 10⁻⁻8. ठीक है. कंट्रीब्यूशन ऑफ H प्लस फ्रॉम H2O is equal to 10⁻⁷. Okay. So the total contribution of H plus is equal to 10⁻⁸ plus 10⁻⁻7. Okay. Now the powers have to be same to add. So what we do is हम इसको लिख देते हैं, this is equal to 0.1 into 10⁻⁻7 plus 10⁻⁻7. So it comes out to be 1.1 into 10⁻⁻7. अब हमें इसका log लेना है and we get the answer. तो द आंसर एक्चुअली वुड बी बिटवीन 6.9 एंड 7. तो इसका जो पीएच आएगा वो 6.9 और 7 के बीच में आएगा. इट इज समथिंग लाइक 6.96. इज इट ओके? तो यहां पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा. ठीक है. एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम HCl इज 10⁻⁸. वाटर को हमने 10⁻⁷ ले लिया. इधर यू कैन मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ यू हैव गुड mathematics, go ahead and make the quadratic equation. It is going to be more accurate. But the question is, do we need to make that much accurate? Okay. So here we cannot okay, network issue. Even if there is a network issue, I believe you can see the recording. यार ये ऑनलाइन में ये नेटवर्क इशू की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसका कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. Okay, so that is the 10 times the concentration of HCl. So here contribution of water cannot be neglected. ये एक important बात है.
ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये नया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बाद में डला है। ठीक है, so here we get it 1.1 into 10 to the power minus 7, and here we get it 6.96 as the answer. No confusions, no problems? Okay. तो ये हमने बात कर ली pH of a strong acid की. Once we have talked about the pH of a strong acid, let us talk about the pH of a weak acid. How do we calculate the pH of a weak acid? Okay. Now, when we talk about the pH of a weak acid, सबसे पहली चीज, in all cases, we are talking about the solution of nearly 0.1 molar concentration. All cases. Near about 0.1 molar concentration. अब 0.1 molar concentration की बात हम क्यों कर रहे हैं? Because we want the contribution from the side of water to be neglected. हम किसी भी केस में contribution from the side of water को consider नहीं कर रहे हैं. ठीक है? So that contribution from water is neglected. ठीक है? So we are able to neglect the contribution from the side of water. Is that clear? Yes, sir. यस सर। ओके भाई, आज क्यों नहीं स्टूडेंट्स आ रहे? अब तो किसी की भी क्लास नहीं चल रही। अर्चना पांडे मैम की क्लास आई बिलीव 6 बजे की शेड्यूल्ड है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। Any concentration much lower than this, the contribution from water will become effective and the calculated value will be different from the observed values. तो इसलिए हम 0.1 मोलर concentration की ही बात करेंगे। ठीक है, in all these calculation, contribution from water has been neglected. Any problems here, anybody? Okay. Now let's talk about the No, pH of sir. a weak acid like acetic acid. How do we calculate the pH of acetic acid? तो चलिए फिर से अब हम लिखना शुरू करना करें। देखो, हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, ऐसे लिखते हैं हम। ये इंटरैक्ट करता है H2O के साथ एंड देयर इज गोइंग टू बी एन इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड, व्हिच सेज हमारे पास आ जाता है H3O plus plus CH3COO minus. Now water is actually a solvent. Now, since water is a solvent, we can actually neglect its concentration. We can ignore its concentration because it's going to remain a constant. So, इस equation को हम ऐसे लिख देते हैं CH3COOH is in equilibrium with H plus plus CH3COO minus. Now, remember, ये सारा का सारा aqueous medium में हो रहा है. Everything is in aqueous medium, so that is what we need to remember. ये aqueous medium में ही हो रहा है. Now, when it happens in the aqueous medium, अब इसको जब हम solve करते हैं, यहां पर फिर से we can use the degree of dissociation or degree of, I should use the word ionization. We are talking about the weak acid which is actually a covalent compound, और covalent compound के अंदर अगर हम बात करते हैं ions के formation की, then in that case degree of ionization is a better word rather than the degree of dissociation. So here again we are going to have it 1 minus alpha. Here it is going to be alpha and here it is going to be alpha, same जैसे कि हमने water की बात की थी, multiplied by C. Now what is C? C is the initial concentration of acetic acid. C is initial concentration of acetic acid, that is the reactant. A chemical equilibrium अगर आपने attend नहीं किया तो I will sincerely request you to attend the chemical equilibrium. And ये हमारे पास आ गया initial concentration of CH3COH. And now ये 1 minus alpha आ गया. अब हमारे पास आ गया K. Now equilibrium constant multiplied by the concentration of water is called Ka. Now what is Ka? Ka is equal to
आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन, जो भी वर्ड आप यूज करें, कांस्टेंट ऑफ एसिड. So Ka is ionization constant of the acid. अब यहां पे हमारे पास Ka आ गया. Ka is equal to the concentration of H plus into concentration of CH3COO minus divided by the concentration of CH3COOH. Now that comes out to be C alpha multiplied by C alpha divided by C into 1 minus alpha. That is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Any confusions, anybody? सीधा सीधा है. अब यहां पर फिर से alpha is neglected in comparison to 1. Acetic acid is a weak acid. We are talking about 0.1 molar concentration. There, alpha is neglected in comparison to 1. Alpha ignored, neglected, compared to 1. So, we get it as C alpha square. Okay. तो हमारे पास आ गया Ka is equal to concentration of CH3COO minus into concentration of H plus divided by the concentration of CH3COOH. That is equal to C alpha square. Now what is alpha? Alpha is going to be equal to under root Ka by C. The same thing what we have done with water, we are going to do same thing here as well. ठीक है. So this is equal to Ka by C. Now Ka by C का मतलब ये हो गया कि concentration of H plus अगर हम निकालेंगे तो concentration of H plus turns out to be C into under root of Ka by C. That will be equal to under root of Ka by C multiplied by C square is equal to under root Ka multiplied by C. So that is the concentration of H plus. Clear? अब अगर हमें pH निकालना है तो चलिए सबसे पहले तो हम निकालते हैं log H plus. Log of the concentration of H plus. This is going to be log of Ka multiplied by C raised to power 1 by 2. So that would become equal to 1 by 2 bracket log of Ka plus log of C. ठीक है ना. देखो एक बात का ध्यान रखना, powers they get into multiplication. Whatever the power would be, negative, positive, जो भी power है, that comes out to be as the negative. ये बाहर आ जाती है in multiplication. So 1 by 2 log K plus log C हमारे पास आ जाएगा and then we can have what? इसको negative log बनाना है. तो minus log of concentration of H plus would be equal to 1 by 2 minus log Ka plus minus log C. So here it comes out to be pH. Now pH would be equal to 1 by 2 bracket minus log of Ka is pKa minus log C के साथ concentration can be greater than 1 as well. तो C के साथ concentration के साथ हम P नहीं लगाते. ओके अनन्या, पंखुड़ी मैम का स्पेशल में लाइव क्लास चल रहा है. कोई बात नहीं, बाद में आके यूट्यूब पे देख लेंगे. बट दे हैव टू मेक अ चॉइस, कांट हेल्प इट. हमारी तो स्टैंडर्ड क्लास चलती है. ओके, सारे के सारे वहां पे हैं, कोई बात नहीं. तो यहां पे हमारे पास पी के आ गया. ठीक है. पी के ए माइनस लॉग सी. So that is what we have as 1 by 2 bracket pKa minus log C, and that is the equation we have. ठीक है. और वी हैव टू मेक अ पर्टिकुलर शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल बहुत ढंग का बनाना है. आपको क्वेश्चंस वगैरह भी करने हैं. तो अभी मैं
मैंने एक केमिकल इक्विलिब्रियम को बना लिया है, बहुत जल्दी हम केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे, टेस्ट पेपर्स, है ना. So this is what we have, and this is how we can find the pH of a weak acid. So this is the formula for the pH of a weak acid. यहाँ पे water is in a huge excess, hence taking the concentration of water is constant. What we get? CH3COH aqueous plus is in equilibrium with H plus CH3CO minus aqueous. We use the degree of dissociation, or you can use the word ionization. Okay. And here we have 1 minus alpha is equal to alpha plus alpha. C into 1 minus alpha, C alpha, C alpha. And we get it C into 1 minus alpha, C alpha, C alpha हो गया हमारे पास. तो यहाँ पे हमारे पास Ka की वैल्यू आ गई है. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? This is the equation that we get. And this is what the expression we get. ठीक है. Alpha is equal to Ka by C. And concentration of H plus is C alpha. The H plus concentration is KAC. Since we have concentration of H plus, we can easily find the pH. pH की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, log H plus की. This is the one, and here it's going to be the formula. भाई हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 2 और 3 5 स्टूडेंट. आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir, it's clear. Ananya, absolutely clear. Advait? Yes, sir. Great. Anybody has to ask anything here? Advait, we have another website, amcev.in. Why don't you join that website so that you will be able to attempt the questions also, assignment also? Okay, sir. Okay. The link is right there in the description. Okay. Okay. And the website is amcev.in. Go ahead and join it so that I will be able to enroll you in the courses. Absolutely free, no charges. Okay. 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 सर हाँ बेटा अनन्या. सीआरटी क्वेश्चंस होने के बाद पीवाईक्यू करने से फायदा होगा? हाँ. एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद पीवाईक्यू करने से इतना फायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस शूट कर जाएगा. ठीक है. आपको पीवाईक्यूज कुछ लगेंगे ही नहीं उसके बाद. बट अदर वे राउंड पॉसिबल नहीं है. पीवाईक्यू करोगे, फंसते चले जाओगे, मजा नहीं आएगा. और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे, उसमें भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि टेस्टिंग तो हो नहीं पाई ना. और इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में अगर आप फंसोगे ना, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे. आपको पहले से ही पता है ये मुश्किल क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चंस है, कैलकुलेशंस है. यू विल टेक योर टाइम. एनसीईआरटी क्वेश्चन चल ठीक है, कर लेते. फिर उसके बाद पीवाईक्यू करोगे, पता नहीं क्यों मुश्किल कहते हैं लोग. यू विल नॉट इवन रियलाइज कि ये क्वेश्चंस मुश्किल है. यार मेरे लिए तो हो गए, आसानी से हो गए, पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं मुश्किल है. आई होप अब तक आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है. नो सर. No, sir. चलो, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. कैलकुलेट द पीएच एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट of 0.1 molar acetic acid at 298 Kelvin if it is 1% dissociated or ionized. ठीक है. एक बात का ध्यान रखना, यहां पे अल्फा की वैल्यू इज 10 रेज टू पावर -2. 1% है ना. 1% का मतलब है 1 in 100. दैट इज इक्वल टू 1 by 100. इज दैट क्लियर? तो अल्फा की वैल्यू 10 रेज टू पावर -2 है. ओके. कंसंट्रेशन की वैल्यू जिसे हम C लिखते हैं, दैट इज 0.1. तो आपके पास C है, आपके पास अल्फा है. फाइंड आउट Ka. आपको Ka निकालना है और आपको pH निकालना है. Ka का फॉर्मूला क्या है? C अल्फा स्क्वायर. pH का फॉर्मूला क्या है? 1/2 ब्रैकेट
pKa माइनस लॉग सी। बेटा ये माइनस है, इस बात का ध्यान रखना। लोग इसको माइनस लिखना भूल जाते हैं और इसकी वजह से क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। सॉल्व इट, गिव मी द आंसर। सारा का सारा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सामने लिखा हुआ है। नाउ गिव मी द आंसर। आंसर अभिनंदन मुखर्जी। Welcome, Abhinandan. Join the website amcev.in so that I can give you the direct link. Hello, sir. Yes, Sir, K is 10 to the power minus 5 perfect. and pH is 0.5. pH 0.5 कैसे आ सकता है? मुझे pH को गड़बड़ी लग रही है। बिल्कुल गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। अच्छा, I check it out. चेक इट, चेक इट, चेक इट। कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक की है, बहुत ही सिली मिस्टेक। देखो, Ka is equal to C alpha square. That is equal to concentration is 0.1. Alpha is equal to 10 raised to power minus 2 raised to power 2. That is equal to 10 raised to power minus 1 into 10 raised to power minus 4 is equal to 10 raised to power minus 5. So that is what we have as Ka. No confusions with that. pH Yes, sir. is equal to 1 by 2 bracket pKa minus log C. Okay. Now that is equal to 1 by 2. pKa is 5. Oh, Negative अच्छा, log of 10 raised to power minus 5 is 5. मैंने Minus 10 to the power minus 5 बता दिया था। minus of log C. So that is minus of log 10 raised to power minus 1. ठीक है? Now that would be equal to 1 by 2 bracket 5 minus of minus 1. So that is equal to 1 by 2 of 5 plus 1 is equal to 6 by 2 is equal to 3. The pH is 3. Everybody got it? Yes, sir. Sir, हाँ अभिनंदन बोलो। formula is half pKa plus pKb. Sir, formula is half pKa plus pKb minus log C. pK माइनस pK बी कहां से आया? Abhinandan, you are giving the formula of a weak acid and a weak base. Salt का फॉर्मूला दे रहे हो आप, pKb कहां से आया यहाँ पे? Okay, sir. You can't understand it. ये देखो, ये है आपका डेरिवेशन. दिस इज द फॉर्मूला. Okay, sir. Abhinandan, you have joined a bit late, so I would suggest you that you go on with the YouTube and YouTube के ऊपर आप पहले से देख लो कि पहले मैंने क्या करवाया है. You will be able to find it out. Formula is written here. फॉर्मूला ये है, ये जो ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला. ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला.
Sir, K is a constant. Ka is the equilibrium constant of dissociation constant or ionization constant for a weak acid. Okay, thanks. ठीक है ना? और एक बात का ध्यान रखना, whatever you are speaking is going on YouTube as well. ठीक है? So all your doubts are being answered on YouTube as well. Okay. So here we get the answer. C alpha square is equal to 10 raised to the power minus 5 is Ka. And when we talk about the pH, this is going to be 3. Correct? Chaliye. Let's talk about the next question. We are going to talk about the dissociation of a weak base. ठीक है? Weak base में हम most often we get the example of ammonia. हम वही ऐसा कोई जरूरी नहीं है. We can actually go into the symbols also, but we normally talk about ammonia. So when we talk about normally ammonia, so we have ammonia is NH3. NH3 plus H2O. Now this goes in the equilibrium to give NH4 plus OH minus. This is the ionization or whatever you may call it for ammonia. अब एक बड़ी मजेदार सी बात बताऊं. NH4OH does not exist. NH4OH जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. क्लियर? बना के देख लो इसका स्ट्रक्चर, अगर बना सकते हो तो. It actually is NH4 plus OH minus, या फिर it is NH3 dot H2O. It is hydrated ammonia actually. But NH4OH हम इतनी बार लिख चुके हैं that हम ये मान के चलते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं NH4OH is in equilibrium with NH4 plus OH minus. Again, there is only one reactant on the left hand side, so we can use 1 minus alpha. Here it's going to be alpha, here it's going to be alpha, multiplied by the concentration of the reactant. The concentration of the reactant will make it C into 1 minus alpha. This is going to be C alpha, this is going to be C alpha, and K. Now here we are going to have Kb because we are talking about the ionization constant of a weak base. So that's why we write Kb. कितना सिंपल है ना केमिस्ट्री. बेस के लिए B लिख दिया, एसिड के लिए A लिख दिया, सॉल्ट के लिए S लिख देंगे, Sp लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, सिंपल. वाटर के लिए W लिख दिया. Kb would be equal to the concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by the concentration of, you may write it concentration of ammonia because it's actually hydrated ammonia, or if you wish to write, you can write the concentration of NH4OH. अगर कोई ज्यादा ही accurate होना चाहता है, then in that case they can write the concentration of hydrated ammonia, यानी कि NH3 dot H2O. Doesn't make a difference, एक ही चीज है. ओके. हाँ, अक्षय ठाकुर एनसीईआरटी में NH4OH बताया, लेकिन उन्होंने ये कब कहा NH4OH एग्जिस्ट करता है? उन्होंने ये कहा NH4OH यूज कर लो. NH4OH मींस NH3 dot H2O. ठीक है, ओके, कोई बात नहीं. मैंने कहा ना, कुछ मैं भी तो लिख रहा हूं NH4OH. मैंने कब कहा कि ये लिखना मना है? Now that's going to be equal to C alpha multiplied by C alpha divided by C into 1 minus alpha. Again, that's going to be C alpha square upon 1 minus alpha. Now alpha is much less as compared to 1. We neglect it, and Kb comes out to be C alpha square. कोई दिक्कत? No, sir. And now we have got Kb is equal to concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by the concentration of, चलो NH4OH लिख देते हैं, and that's equal to C alpha square. So alpha will be equal to under root Kb divided by C. Okay, concentration of OH minus is equal to C alpha, that will be equal to under root of Kb multiplied by C. अब यहाँ पे derivation करने की जरूरत तो नहीं है ना, we have already done the derivation for it.
यस सर। परफेक्ट। सो अब हम निकालेंगे क्या? POH। सो वी कैन गेट इट P। नहीं, पहले एक काम करते हैं, सीधा सीधा नेगेटिव लॉग निकाल लेते हैं, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वी आर टॉकिंग अबाउट 298 केल्विन। वी आर टॉकिंग अबाउट 298 केल्विन। 298 केल्विन का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू KW, which is equal to 10 raised to power minus 14. ठीक है, इट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 14। अब 10 raised to power minus 14 की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट सिंपली मींस दैट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस will be equal to KW divided by the concentration of OH minus। Clear? यानी कि that will be equal to 10 raised to power minus 14 divided by the concentration of OH minus। तो आप यहां से भी सीधा सीधा concentration of H plus निकाल सकते हैं। वो अलग बात है कि I don't prefer it, मैं मेरी आदत है। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं और सारे तरीके सही होते हैं। तो विच एवर वे यू फाइंड इजीएस्ट, डू दैट वे। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन करोगे, अपने आप लगेगा कि कौन सा मेथड इजी है। कोई भी मेथड से तुम करना शुरू करो, सारे इजी हैं, देयर इजंट एनी डिफिकल्ट मेथड। तो विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, यूज इट। ठीक है, तो मेरा मेथड यही है, log OH माइनस इज गोइंग टू बी 1/2 log KB। किसमें कम कंज्यूम होता है क्या चीज? सर? कौन सा मेथड में टाइम कम कंज्यूम होगा? जो आपको अच्छी तरह आता है। ठीक है ना? अगर आप गूगल मैप पे जाना कई बार होता है ना कि एक गूगल मैप से जाते हैं लोग रास्ता लेकर, एक होता है अपने रास्ते से जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। आप पैसे बचाना चाहते हैं तो गूगल मैप ये भी सजेस्ट करता है कि ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसमें टॉल नहीं है। कई बार ये होता है कि टॉल वाला लंबा भी होता है और पैसे भी लगते हैं, बट हाँ सड़क अच्छी होती है। अंदर से चले जाओगे, सड़क छोटी भी है, रास्ता भी, टाइम भी कम लगेगा, लेकिन सड़क उबड़ खाबड़ है। तो चॉइस होती है हर किसी की, आपकी भी चॉइस है। और कोई भी मेथड आप यूज करो, कोई भी मेथड आप यूज करो, जैसे ही आप करना शुरू करोगे टाइम सब में बराबर लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास आ गया नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। नाउ दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2 नेगेटिव लॉग ऑफ KB प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ C। Negative log of OH minus is equal to POH. That's going to be equal to 1/2 PKB minus log C. Okay. Then pH is equal to PKW minus POH. ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा इजी लगता है, मुझे पर्सनली, कि POH निकाल के 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, इजी। So pH will be equal to PKW minus 1/2 bracket PKB minus log C। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। PKW means 14. 14 at 298 Kelvin। टेम्परेचर इज मोर इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर बदल दिया, ये वैल्यू Okay, बदल okay. जाएगी। अभिनंदन, यू हैव जॉइंड द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? Yes, sir. ओके, यू गॉट द रेफरेंस फ्रॉम यूट्यूब? Yes, sir. ओके, फाइन। टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन For द you क्लास यार। plus. हाँ, Your free YouTube plus, sir. ओके, Free YouTube plus. फ्री यूट्यूब प्लस। ओके फाइन, जो भी है, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना यार, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है एक वॉचिंग है इस समय यूट्यूब पर, वो मैं ही हूँ शायद। So let's talk about the dissociation of a weak base. NH3 plus H2O gives NH4 plus OH minus, and NH4OH aqueous gives NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous। ठीक है, 1 minus alpha
अल्फा अल्फा, सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन Kb विल बी इक्वल टू NH4 प्लस, यहां पे हमने NH4OH ले लिया, नॉट अ प्रॉब्लम। देन वी कैन हैव दिस इक्वल टू दिस। कर लिया ना ये सब कुछ? कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो कंफ्यूजन। अल्फा इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1 एंड Kb by C आ गया हमारे पास अल्फा की वैल्यू, OH minus is C alpha, Kb C. And since we have the concentration of OH minus, we can easily find the POH. OH minus से POH निकलेगा and we have got the value. ठीक है? सर टुडे हाँ, सेशन सॉलिबिलिटी हो गया, सॉलिबिलिटी। अभिनंदन बेटा, अगर सॉलिबिलिटी हो गया तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। आई एम नॉट रशिंग थ्रू द सब सेशन। मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने दिन में करना है, इतने टाइम में करना है। गिन के मेरे पास कितने बच्चे हैं? 4। तो 4 बच्चे कहेंगे सर समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी करा देंगे। कोई कहेगा नहीं सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो रुक के समझा देंगे। दिस इज अ पर्सनल ट्यूशन, समझे? ओके, so this is the log OH minus 1 by 2 log Kb minus log C, and here is the formula for POH. Everybody has noted it down? किसी को कोई confusion है तो बता दो। राधिका is here. यस सर। अक्षय ठाकुर का सेशन में गड़बड़ हो रही है, इसलिए अक्षय ठाकुर कभी होते हैं कभी गायब हो जाते हैं। ओके, चलो। So that's what we have as the formula for pH. So क्वेश्चन करें, सॉल्व करो। Solve the question. राधिका भी है, अक्षय ठाकुर भी है, तो फिर यहाँ पे पहले एक क्यों दिखा रहा था? चलो, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ होती रहती है यूट्यूब पे। 2 वॉचिंग है हमारे यूट्यूब पे, पूरे 2 बच्चे हैं, राधिका एंड अक्षय ठाकुर। बेटा फ्यूचर डॉक्टर अपने सही नाम से आया करो यार। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। स्टार्ट इट। बस एक छोटा सा हिंट देख लेना आप। पी ओ पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस POH. So POH will be equal to 14 minus pH. pH की वैल्यू आपको दे रखी है, pH is 11. 11. So POH is equal to 14 minus 11, that is equal to 3. थ्री। So the concentration of OH minus will be equal to 10 raised to power minus 3. माइनस। Now solve it. The concentration of OH minus is equal to C alpha. और ये C और अल्फा आपको निकालने हैं। POH is equal to 1 by 2 bracket PKB minus log C. PKB आपको दे रखा है, POH आपको दे रखा है। कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन निकालते ही आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन पता है, C आपको पता है, अल्फा निकल जाएगा।
सर 3.2 आ रहा है, 3.2 आ रहा है। 3.2 क्या चीज आ रही है? 3.2 कंसंट्रेशन। 3 is equal to 1 by 2 bracket 5 minus log C. Okay, so that would mean 6 minus 5 is equal to minus log C. Log C is equal to minus 1, C is equal to 10 raised to power minus 1. So the concentration is equal to 0.1 molar. ठीक है, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir, done. So we know C is equal to 10 raised to power minus 1, that is 0.1. Okay. And 10 raised to power minus 3 is equal to 0.1 multiplied by alpha square. हाँ फ्यूचर डॉक्टर कुछ पूछना चाहते हो पूछो. आपने सर कहा 0.01 0.01. Yes, it is 0.01. तो 10 raised to power minus 3 divided by, नहीं एक मिनट नीट पे एग्जाम, कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स. हाँ कर देंगे. 0.1 इंटू अल्फा आ जाएगा ना, सी अल्फा. तो बेटा बेसिक मैथमेटिक्स कर लेंगे. बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास हाँ चलो लगा लेंगे. वैसे मेरे चैनल पे जाओगे, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं इसमें ऑलरेडी. हैव यू सर्च माय चैनल? इसमें बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है. यस सर. सर जरूरत नहीं है लाइव क्लास का, रिकॉर्डेड देखने से हो जाएगा बेसिक मैथ्स का. हो जाएगा, पर आप देखोगे तो ना. सर फिजिक्स में अर्चना मैम जो जो टॉपिक्स करा रही है, लॉग्स, इंटीग्रेशन, वो सब तो केमिस्ट्री में भी आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा, बट केमिस्ट्री में कम आता है. फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा पार्ट होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा कम होता है. सर तो उससे हो जाएगा ना कि एक्स्ट्रा तो कुछ और नहीं करना पड़ेगा लेक्चर्स? नहीं. I'll prefer to have another mathematics teacher. I'll try to get another mathematics teacher to get you for chemistry, some mathematics of chemistry. Let's see. Sir, alpha is 0.1. Alpha is 0.01 beta. यस सर 0.01 सर. यहाँ पे हो जाएगा ना, alpha is equal Oh, to 10 sorry, raised to power मैं minus 3 divided by 0.1. That's equal to 10 raised to power minus 3 plus 1 is equal to 10 raised to power minus 2. So alpha is equal to 10 raised to power minus 2. That is equal to 0.01. मजेदार बात देखोगे, this okay, question is sir. exact reverse of the previous question. Is it clear? यस सर. चलो, I think I'll have to Yes, have sir. the chemistry के बारे में एक छोटा सा लॉग का सेशन ले लेते हैं. बहुत ज्यादा लॉग हमें नहीं चाहिए होता. और हाँ अनन्या, यू हैव सेंट कि हमें लॉग के वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी. द फैक्ट इज आपको लॉग की वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एट द मोस्ट लॉग 2, दैट इज 0.3, काफी है. और कोई लॉग की वैल्यू की जरूरत हमें पूरी सेशन में, पूरी केमिस्ट्री में नहीं पड़ती. फाइन. आपने कहा ना लॉग 2, लॉग 5, लॉग 7, लॉग 3, कोई जरूरत नहीं है. केमिस्ट्री के लिए जरूरत यस नहीं सर. पड़ेगी. नहीं पड़ती जरूरत. लॉग 2 ही काफी हो जाता है. वैसे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती. इसकी भी जरूरत होती है तो जो वो बताते हैं कि ये वैल्यू है. ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और ये मैं आपको प्रूव करूंगा व्हेन वी आर गोइंग टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम खूब सारे करने वाले हैं. देखना लॉग की वैल्यू जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती. ठीक है. पीके बी माइनस लॉग सी
pKw minus pH minus is equal to 14 minus 11 is equal to 3, pOH is equal to 1 by 2 pKb minus log C, and this is how we solve it. C की वैल्यू 0.1 आ जाती है, KW की अल्फा की वैल्यू 0.01 आ जाती है। अच्छा, अब एक सवाल पूछते हैं। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर है, okay, and we are using it to neutralize some acid. Which of these will require more of sodium hydroxide for complete neutralization? 100 milliliter 0.1 molar HCl or 100 milliliter 0.1 molar acetic acid. Acetic acid is a weak acid, hydrochloric acid is a strong acid. दोनों में से किसको ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होगी फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन? ठीक है, let us say this is A, let's say this is B. Give me the answer, A or B? सर ए। अक्षय ठाकुर, जिन्होंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का Sir, सेशन लिया था A उनका is नाम A धर्मराजन है। is more value. ओके, A is more. A. Hello Jeremiah, how are you? Welcome Sir, to the 100 session. ml 0.1 m HCl. यानी ये होगा. Jeremiah, join the website amcev.in so that I can give you the direct link of the session. You don't have to ask Sir, to enter HCl there. is more concentrated. Okay, sir. HCl is more concentrated. A is going to require more of sodium hydroxide. That's what you are trying to say, isn't it? Jeremiah, you have raised the hand. If you want to ask anything, go ahead and ask it. Sorry, sir, nothing. Okay, fine. Sir, video is not visible. Video is not visible. Video is visible. विजिबल सर। Visible, visible. Sir. Perfectly visible. Now, HCl is a strong acid which is completely dissociated, and since it is completely dissociated, acetic acid is a weak acid which is partially dissociated. So one would say that this would require more. But एक चीज आप भूल जाते हो. You forget one thing, and that is when we talk about acetic acid, CH3COOH, which is in equilibrium with H plus CH3COO minus, this H plus is only 1% of the total acetic acid which is available. Okay, but the moment we add base, this H plus reacts with OH minus to give H2O. Addition of base removes H plus from system. Now H plus is the product of the reaction. You are removing a product from the reaction mixture. If you remove a product from the reaction mixture, which direction the reaction will shift? क्या reaction वहीं का वहीं रहेगा? Shift नहीं होगा. So the reaction is going to shift in the forward direction. Okay? Forward direction. And if the reaction shifts in the forward direction, then in that case, this is going to dissociate further. और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये पूरा कंज्यूम ना हो जाए. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर कौन सा ज्यादा कंज्यूम करेगा? The answer is both same. सर आपके चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स वीडियोस नहीं है। हाँ नहीं है, डाल दूंगा. ठीक है, ओके सर। लगा देंगे बेसिक मैथमेटिक्स क्लास. आप बोलो कौन सी क्लास लगानी है, वो लगा लेंगे. अपना राज है भाई, अपना चैनल है, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तुम बोलो, तुम आओगे ना क्लास अटेंड करने, हम क्लास लगा देंगे.
ये सर जरूर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, वैसे यहां पर कहीं पे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? सिर्फ लॉग में। लॉग में तुम्हें लॉग के अंदर बात करनी है, तो लॉग के अंदर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू, जो आपने लिखे थे फॉर्मूला लिख के दिए थे ना, यस सर। लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, log of a by b is equal to log of a minus log b। ठीक है, log of a raised to power b is equal to b log बी a। इंटू लॉग ए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर लॉग की वैल्यूज को कैसे मतलब कि नहीं हैंडल याद करें? रखनी, नहीं याद रखनी, log की वैल्यू अगर जरूरत होगी तो पेपर में दी जाएगी। हम जबरदस्ती चीजें रटवाना शुरू कर देते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, पेपर में दी जाती हैं। सर अगर स्कूल एग्जाम्स में लॉग की वैल्यू ना दी जाती फिर उसमें चीज में क्या करें? अगर स्कूल एग्जाम में लॉग की वैल्यू नहीं दी जाएगी तो लॉग टेबल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि लॉग की वैल्यू नहीं दी जाए, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी लॉग की वैल्यू दी जाती है। बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉग टेबल वैसे अलाउड है, बट दे डोंट गिव इट, दे विल गिव यू द लॉग वैल्यूज। डोंट वरी अबाउट इट, नहीं होता ऐसे, लॉग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ओके सर। ओके, जस्ट डोंट वरी। जब क्वेश्चंस करेंगे जहां पे जिसकी चीज की जरूरत होगी करवा दूंगा, लॉग टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी लॉग टेबल ही दे दूंगा। ओके, वो भी सिखा दूंगा, जो जरूरत होगी वो करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, फाइन, क्लियर। ओके सर। तो हम ये एक बात कह सकते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट एसिटिक एसिड, तो acetic acid, this part is 99%, this part is 1%, and this is a reserve. So we can call this as a reserve acid. So weak acids have reserve acid with them. ठीक है, अब अगर हम एसिटिक एसिड के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड H प्लस को कंज्यूम करता है, बट एसिटिक एसिड कुछ H प्लस को प्रोवाइड कर देता है। तो जितना पीएच चेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना पीएच चेंज होता नहीं है। क्लियर? तो एसिटिक एसिड रेजिस्ट्स द चेंज इन पीएच व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू इट। ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज एसिटिक एसिड हैज अ रिजर्व एसिड विद इट। यस सर। एनी कंफ्यूजन हियर? ठीक है, so only a small amount of the weak acid or weak base dissociates or ionizes. Hence, a very small amount of it is visible. कोई problem? But it has a नो। large amount of reserve acid or a base equal to its total concentration. So if we have a if we have a weak acid, it will resist the addition of a base. If we have a weak base, it will resist the addition of the acid. ठीक है? Yeah. So the sample which is dissociated is actually the last one to be consumed once reserve is consumed. It is something like कि आपने शॉप की विंडो में एक सैंपल यहां पे शो करके रखा हुआ है, कोई कहता है मुझे ये खरीदना है, आप कहते हो इसको रहने दे, ये ले, अंदर से लाके दे देते हो, अंदर से लाके देते हो, वो गोडाउन खाली होता चला जाता है, शॉप की विंडो में वही सामान पड़ा रह जाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द पीएच। ठीक है,
So pH of a weak acid or a weak base in its neutralization reaction remains almost a constant up to the end of the reaction. ज़्यादा change नहीं होता pH में. Is it clear? So this observation tells us HCl and CH3COH will consume the same amount of NaOH for complete neutralization. The initial pH in the case of HCl will be much lower than acetic acid. ठीक है? Fine. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमें समझ में आ गया. ये मैंने आपको बता दिया. So both require the same amount of sodium hydroxide. ठीक है? चलो अब एक छोटी सी बात देखते हैं. I have acetic acid, CH3COOH. This dissociates to form H plus and CH3COO minus. Clear? Now this is what we can call as a reserve acid. So this reserve acid is going to consume the OH minus that I add in the system. तो अगर मैं एसिटिक एसिड को लेता हूं, एसिटिक एसिड डाल के रखता हूं किसी चीज में, तो वो बेस को कंज्यूम कर लेगा और पीएच को चेंज नहीं होने देगा. तो एसिटिक एसिड विल बिहेव एज अ सिंक फॉर द बेस. लेकिन अगर मान लो मैंने इसमें HCl डाल दिया, तो अब HCl क्या करेगा? HCl बेस को कंज्यूम करेगा ना. इस सिस्टम में बेस कौन सा है? बेस है ये. HCl इसे कंज्यूम करेगा. अब ये तो है नहीं हमारे पास सिस्टम में, क्योंकि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. तो अगर हम ये भी कहीं से डाल दें, तो this system will be able to consume the acid as well as base and will resist the pH when a small amount of strong acid or a base is added to it. Now where do we add the reserve base in it? एक काम करते हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं NaCH3COO, यानी कि सोडियम acetate. Now sodium acetate is a salt. It's a strong electrolyte. It's a salt and it's a strong electrolyte. So this is going to completely dissociate to give Na plus and CH3COO minus. Now this will become reserve base. Now if you add acid, this will be consumed. If you add base, this will be consumed. And this system is going to resist the change in pH on addition of a small amount of strong acid or a strong base. ठीक है? ऐसे सिस्टम को बफर कहते हैं. Sir, it is common ion effect. I didn't even talk about common ion effect as yet. I'm just telling you that this system has reserve acid and reserve base. Okay? There is no common ion effect at the common ion effect is going to work here. No doubts to that. It will work. The only thing is buffer action is not because of common ion effect. Buffer action is because of the reserve acid and the base present in the system. Clear? Okay. The system which contain reserve acid and base so that they can consume a small amount of added acid or base without any significant change in pH are termed as buffers. Okay? हमारे पास acidic buffer होते हैं, हमारे पास basic buffer होते हैं. The buffer mostly are the mixture of weak acid along with their corresponding salts, or weak acid or base. यानी कि it's a mixture of weak acid, weak base along with their salts.
So that is what we have as a buffer. Okay, this is going to resist the change in pH. So buffers are compounds नहीं बोलना चाहिए, systems that resist changes in pH. Okay, upon the addition of limited amount of acids or bases. If you add a huge amount of acid and base, then in that case buffer won't be able to resist it. Its pH change हो जाएगा. And there comes the word called buffer capacity. Okay, buffer systems are usually composed of a weak acid or a base and its conjugate salt. Clear? So that's what we have as buffers. The components act in such a way that addition of an acid or a base results in the formation of a salt. Acid डालो तो भी और base डालो तो भी a salt will be formed, causing only a small change in pH. ठीक है, बहुत ज्यादा pH अगर मेंटेन करना है तो we can even use a pure strong base, और अगर बहुत लो pH यूज करना है तो concentrated solution of strong acid is also used. हमारे जो बॉडी है उसके अंदर 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वीक एसिड नहीं है हमारी बॉडी में, एंड दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ बफर टू मेंटेन द पीएच. इज इट ओके? क्योंकि हमें लो पीएच चाहिए, नियर अबाउट 1 और 2 के बीच में चाहिए, तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए. ठीक है, फॉर नियर न्यूट्रल पीएच यानी कि 6 to 8 के बीच में अगर हमें पीएच चाहिए, देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट बी अफेक्टेड. तो वहां पे हमें वीक एसिड और वीक बेस विद देयर सॉल्ट चाहिए होता है. ठीक है, कंसेंट्रेशन हाई है, significant amount of acid or base consume कर लेता है, but dissociation is low, so the pH is near to neutral. Clear? ठीक है, तो ये हमारे पास बात थी कि अगर हम एसिड की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं, तो क्या होता है. ठीक है, चलिए अब एसिटिक एसिड की बात करते हैं. डिसोसिएशन की बात तो हमने कर ली. हमारे पास है CH3COOH. It's in equilibrium with H plus plus CH3COO minus. ठीक है, इसमें हमने डाल दिया, चलो CH3CONA लिख देते हैं, CH3COONA. This dissociates to give Na plus plus CH3COO minus. Now, Ka of acetic acid is equal to the concentration of H plus into concentration of CH3COO minus divided by the concentration of CH3COOH. ठीक है, अब ये आ जाएगा concentration of H plus. Now CH3CO minus, if I talk about the concentration of CH3COO minus, it is coming from two sources. One is CH3COO minus from CH3COOH. Okay, and then there is another concentration of CH3COO minus from the salt. Now salt is a strong electrolyte. Acid is a weak electrolyte. This is a weak electrolyte. Now, if it is a weak electrolyte, then the salt will suppress its ionization. यहां आ रहा है common ion effect. The salt will suppress its ionization. Acetate ion from acetic acid पहले से ही कम था, and because of the salt, it is going to become further less. So this part is insignificant. Clear? So we can consider the acetate concentration to be the concentration of the salt. So here we can say this is the concentration of the salt divided by, now this concentration, alpha was already low. Now it becomes further low. So it is going to be simply the concentration of the acid. Any confusion at this point? No, sir. Everybody absolutely clear? No, sir. Okay. Now, what we can understand is
Here we have Ka is equal to concentration of H plus into concentration of the salt divided by the concentration of the acid. Let's take the log of it. Log Ka. That will be equal to log of concentration of H plus log of concentration of the salt divided by the concentration of the acid. Now what we do is we interchange it. Log H plus को left hand side पे ले जाते हैं, log Ka को right hand side पे ले आते हैं. What do we get? Minus log of concentration of H plus is equal to minus log Ka plus log concentration of the salt upon concentration of the acid. Any confusions here? Now what is this? This is pH. What is this? This is pKa plus log of salt upon acid. And what is this equation known as? This is Henderson's Hasselbalch equation. Sir, it is acidic buffer. Yes, this is acidic buffer. This is Henderson's Hasselbalch equation for the acidic buffer. Clear, sir. Any confusions, anybody? No, sir. Okay. No, sir. नोट कर लिया सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Noted. Okay, that's great. So here we have the entire definitions and explanations and all. Now there is something called buffer capacity. It's a measure of efficiency of a buffer. That is how much acid or a base it can consume to before it shows a significant change in pH. Clear? Conventionally, the buffer capacity is expressed as the amount of the strong acid or a base in gram equivalents that must be added to change the pH of 1 liter of the solution by 1 unit. That is what we have as the buffer capacity. Forget about it. आपके कोर्स में नहीं है बफर कैपेसिटी. कहीं कहीं किसी किसी किताब में किसी किसी इंस्टीट्यूट में बफर कैपेसिटी की बात करते हैं. But here we are not going to be bothered about what buffer capacity is. The buffer capacity depends on two factors. First of all, it depends on the ratio of the salt to the acid or the base. कितना salt कितना acid है हमारे पास. ठीक है. And second, quite obviously, the buffer capacity is maximum when the ratio is 1:1. यानी कि जब pH pK के बराबर है. ध्यान रखना, salt upon acid की जब हमने बात की थी तो salt और acid का concentration अगर बराबर है, they are going to get cancelled. So salt ratio, acid ratio is same. Now concentration of salt and concentration of acid is the same. We have pH is equal to pKa plus log of the concentration of the salt upon concentration of the acid. Now if I take the concentration of salt and acid to be equal, this is going to become log 1 and log 1 is 0. So pH becomes equal to pKa. Okay. Is it clear, Abhinandan? Yeah, okay. So it is out of syllabus, buffer capacity. No. This one is in syllabus. Okay, Buffer okay. capacity formula is out of syllabus. Okay. This one is absolutely in the syllabus. Otherwise, I would not have been teaching you. Okay? Now that is total buffer concentration. How much buffer concentration we have? Clear. One thing is the ratio of the salt and the acid or the base. Another one is how much buffer concentration is there. Quantity kitni hai? Ultimately, mass matters. Okay? It will take more acid or base to deplete a 0.15 molar buffer than a 0.05 molar buffer. Fine. So let's talk about the Henderson's Hasselbalch equation for the acetic acid and sodium acetate buffer.
ये मैं आपको बता चुका हूं, देखते जाओ, कोई कंफ्यूजन किसी को अगर है तो पूछ लेना। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट भी है, क्लियर। Acetate ion is considered to be from the salt. Salt is a strong electrolyte, it's the concentration of the salt. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, and this is the Henderson's-Hasselbalch equation for a weak acid and its salt. ठीक है, this is for the acidic buffer. इक्वेशन नोट कर लिए ना, लिखनी है ना सबने, जिससे कि हम अब क्वेश्चंस कर सकें। Yes, sir. Yes, sir. Note it. Note it. Then we can talk about ammonium hydroxide, sodium hydroxide, ammonium hydroxide and ammonium chloride buffer also. It is salt buffer. Yeah, it is going to be a basic buffer. Base, weak base along with its salt. ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। हमारे पास है ammonium hydroxide. Now ammonium hydroxide is going to dissociate to give us NH4 plus plus OH minus, and then we have ammonium chloride, which is going to dissociate completely to form NH4 plus plus Cl minus. Now we have the Kb. Now Kb would be equal to the concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by the concentration of NH4OH. Now, as we have done with the acidic buffer, this NH4 plus is going to be mainly coming from the salt. So here we have the concentration of the salt into the concentration of OH minus divided by the concentration of the weak base. Clear? Let's take the log. Log Kb is equal to log of the concentration of OH minus plus log of the concentration of the salt divided by the concentration of the base. Clear? Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें. The moment we interchange it, it becomes POH is equal to PKB plus log of the concentration of the salt divided by the concentration of the base. Now, this is the Henderson's-Hasselbalch equation for the basic buffer. Anyone has any doubts in it? No, sir, it's clear. Clear, sir. Everybody absolutely clear? Radhika, Akshay. So here we have the same thing, same thing, same thing. The Henderson's-Hasselbalch equation for the basic buffer. So pH is going to be equal to pKw minus the pOH. Okay, Okay, sir. Okay. solve this question. Tomorrow morning, 10 o'clock, we will finish off with the ionic equilibrium.
Solve it. Answer. ऋषभ के facts. Beta, nobody is inviting me from PW. Sir, 10 points, 10 zero point 4. something. Hmm. 10.04. Okay. Buffer made by mixing 0.1 moles of sodium acetate with 1 mole of acetic acid in 100 milliliter of the solution. First of all, 100 milliliter of solution doesn't make a difference. It's going to get cancelled out. So we have pH is equal to pKa plus log of the concentration of salt divided by the concentration of the acid. Okay. Now the pH will be equal to pKa is 5 plus log of the concentration of the salt. Salt is 0.1, acid is 1. Okay. So that will be equal to 5 minus 1. क्या हुआ? The answer is 4. How did you get it 10 point something? कैसे आया आपका? Is that clear? Acidic pH. Yes, it will be acidic pH. It's a weak acid with a strong with a salt. Weak acid with a salt is going to be giving acidic pH. This is the solution. The answer is 4. Solve this question. Solve this question and we are going to end the session.
सर पीएच क्या दिया हुआ है? 6. सेवन. Mm-hmm. Answer to this question. Sir, 1.31. 15.3. सबसे पहली बात तो है 500 मिलीलीटर बफर सॉल्यूशन इज इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 500 को भूल जाओ. Let the mass of the salt be x. सर 12. मैं pH नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मास पूछ रहा हूँ. हाउ मच मास इज रिक्वायर्ड? pH is equal to pK plus log of salt upon acid. This is the equation. देखो.
आगे आंसर। X is 82 grams. $82. 82. Okay. The answer is 82 grams. So tomorrow we are going to have the class at 10 o'clock in the morning, and tomorrow we are going to finish off this chapter. What are we left off with? We have to talk about salt hydrolysis, and we have to talk about the सर solubility product. Yes. PDF शेयर कर देंगे आज का सेशन का? आज नहीं शेयर करूंगा, कल शेयर करूंगा पूरे सारे सेशंस का। ठीक है, रिवाइज कब करेंगे? एनसीईआरटी खोलो और आज का सेशन दोबारा देख लो। Sir, practice question, please provide me Telegram. Did you join the website amcev.in? Abhinandan, did you join the website I No, told sir. you? No, sir. Join it. Here you are going to get more than what you can do practice question. जितने आप कर सकते हो उससे ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? जल्दी से ज्वाइन कर लो। जेरेमिया, यू ऑल्सो ज्वाइन इट। अभिनंदन, यू ऑल्सो ज्वाइन इट Okay, sir. सो दैट आई कैन गेट यू। पॉडकास्ट कब होगा बेटा? पॉडकास्ट आई बिलीव कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। वी आर गोना मीट Thank- टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock। थैंक यू ठीक है, सर। सेशन मैंने अभी बनाया नहीं है, बना दूंगा। याद रखना 10 बजे क्लास है, अभी सेशन बन जाएगा। बाय बाय।